We are starting the class, है ना? और लास्ट टाइम हमने सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस पढ़ा था, विच इज एन ऑटो इम्यून डिजीज. हमने देखा था कि ऑटो इम्यून डिजीजेस जो है वो दो तरह की होती हैं. एक तो ऑर्गन स्पेसिफिक हो सकती है या सिस्टमिक हो सकती है. तो ऑर्गन स्पेसिफिक जो है वो हम जो है विद ईच ऑर्गन, है ना. जैसे थायराइड जब पढ़ोगे तो थायराइड की ऑटो इम्यून डिजीज पढ़ोगे, टेस्टिस पढ़ोगे तो टेस्टिस की ऑटो इम्यून डिजीज. तो ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज हम लोग सिस्टमिक पैथोलॉजी में कवर करेंगे. यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग ऑटो इम्यून डिजीज विच आर सिस्टमिक इन नेचर, है ना. मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट जिसमें होता है. So after SLE, the next disease is rheumatoid arthritis. ठीक है. So after the complete discussion on SLE, I'll start with the next disease, which is rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis नाम से ऐसे लगता है कि it only involves joint, पर ऐसा नहीं है. It's a systemic disease. Multiple organs of the body are involved. Though it is called rheumatoid arthritis, it is not just arthritis, but multiple systems are involved. It's a systemic autoimmune disease. The definition of rheumatoid arthritis is a systemic chronic inflammatory disease affecting many tissues. As I've told you, it's a multi-organ disease, so it affects many tissues, but principally attacking the joints to produce a non-suppurative proliferative synovitis. Non-suppurative का क्या मतलब हुआ? Do you know suppurative क्या होता है? Suppurative is pus forming. So non-suppurative is जिसमें कि pus नहीं form हो. Non-suppurative proliferative synovitis. Joints are lined with synovial membranes, so it causes non-suppurative proliferative synovitis that frequently progresses to destroy articular cartilage and underlying bone with resulting disabling arthritis. लास्ट टाइम जब SLE पढ़ाया था मैंने, तब ये बताया था कि जो है SLE में जो है आर्टिकुलर कार्टिलेज और वो नहीं इन्वॉल्व होती है ना. इन कॉन्ट्रास्ट जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इट डिस्ट्रॉयज द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड अंडरलाइंग बोन. और इसकी वजह से बिकॉज आर्टिकुलर कार्टिलेज इज डिस्ट्रॉयड एंड द बोन इज डिस्ट्रॉयड, इट कॉजेज डिसेबलिंग आर्थराइटिस. When extra articular involvement develops, for example, of the skin, heart, blood vessels, muscles and lungs, rheumatoid arthritis may resemble SLE or scleroderma. Rheumatoid arthritis is a very common condition with a prevalence of approximately 1%. It is 3 to 5 times more common in women than in men. तुमको याद हो SLE is 9 times more common. So all these autoimmune diseases are more common in females. So rheumatoid arthritis is also 3 to 5 times more common in women than in men. The peak incidence is in the second to fourth decade of life, but no age is immune. I don't want any talking. अब बिकॉज हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आर्थराइटिस इज द प्रिडोमिनेंट फीचर, है ना. दो इट्स अ सिस्टमिक डिजीज, बट मेनली द जॉइंट्स आर इन्वॉल्व. सो इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस इट टिपिकली प्रेजेंट एज सिमेट्रिक आर्थराइटिस, प्रिंसिपली अफेक्टिंग द स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड, फीट, ankle, knees, wrist, elbows and shoulders. ठीक है. Small joints of hands and toes. Typically the proximal interphalangeal joints and metacarpophalangeal joints are affected, but distal interphalangeal joints are spared. Axial involvement when it occurs is limited to the upper cervical spine.
Similarly, hip joint involvement is extremely uncommon. So, it's a symmetric arthritis principally affecting the small joints of hands and toes. Affected joints show chronic synovitis characterized by synovial cell hyperplasia and proliferation. तो पहले चीज क्या होती है जॉइंट में साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है साइनोवियल सेल लाइनिंग होती है उसका हाइपोप्लेजिया एंड प्रोलिफरेशन होता है dense perivascular inflammatory cell infiltrates, increased vascularity due to angiogenesis, neutrophils and aggregates of organizing fibrin on synovial surface and on the joint surface, increased osteoclast activity in the underlying bone leading to synovial penetration and bone erosion. Repeatedly मैं बता रही हूँ कि in contrast to SLE rheumatoid arthritis में articular cartilage destroy होती है और underlying bone भी destroy होती है. So increased osteoclastic activity in the underlying bone leading to synovial membrane penetration and erosion and bone erosion. The classical appearance is that of a pannus. तो अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो एक तो मोटी बात है कि स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड एंड फीट आर इन्वॉल्व है ना डिस्टल इंटरफेलेंजल जॉइंट एंड मेटाकार्पोफेलेंजल जॉइंट्स आर इन्वॉल्व और जो डिस्टल इंटरफेलेंजल जॉइंट है वो स्पेयर्ड होते हैं और जो हिस्टोलॉजिकली जो लीजन होता है उसे कहते हैं पेनस क्या कहते हैं पेनस कहते हैं और पेनस जो है वो उसमें प्रोलिफरेशन एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है एंजियोजेनेसिस होता है और पेरिवेस्कुलर लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन होता है. Pannus is formed by proliferating synovial lining cells admixed with inflammatory cells, granulation tissue, and fibrous connective tissue. The overgrowth of this tissue is so exuberant that the usually thin, smooth synovial membrane is edematous, frond-like into lush projections with full-blown inflammatory joint involvement. Periarticular soft tissue edema usually develops. So frond-like proliferation of synovial membrane होता है. So there is frond-like proliferation जैसे कि villus जैसे intestine में होते हैं villus type proliferation होता है. अब ये तो हमने हिस्टोलॉजिकली देखी और जॉइंट मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं. Classically it is manifested first by fusiform swelling of proximal interphalangeal joint. माइंड यू प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजल जॉइंट इन्वॉल्व होता है डिस्टल जो स्पेयर्ड होता है. With progression of disease, the articular cartilage subjacent to pannus is eroded and is virtually destroyed. The subarticular bone may also be eroded. Eventually, the pannus fills the joint space. अब मैं किसी को बोलता हुआ देखूंगी ना तो I'll throw you out of the class. I don't want any noise. तुमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना चुपचाप बैठो जो भी करना है करो but don't disturb others. The subarticular bone may also be eroded. Eventually the pannus fills the joint space and subsequent fibrosis calcification may cause permanent ankylosis. ये joint जो है in rheumatoid arthritis है. This is the normal side. यहाँ पे देखो there is proliferation of hyperplasia of synovial membrane और यहाँ पे जो है chronic inflammatory cell infiltrate हो रहे हैं और इसको हम पेनस कहते हैं. और यहाँ पे जो है joint cavity filled by hyperplasia और ये hyperplastic synovial membrane it is thrown out in the form of leaves है ना. इसको फ्रॉन्ड लाइक होती है या विलस आर्किटेक्चर होती है. नेक्स्ट पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि ऊपर वाली जो सेल्स हैं दैट इज हाइपरप्लेजिया ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड देयर इज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स. सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. रूमेटॉइड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स. अब मैंने बताया कि
It's a systemic disease. So apart from the joints, और भी organs involved होते हैं, and there are subcutaneous nodules. Rheumatoid subcutaneous nodules develop in about one-fourth of the patients, occurring along the extensor surface of the forearm or other area subjected to mechanical pressure. Rarely they can form in the lungs, spleen, heart, aorta, and other viscera. Rheumatoid nodules are firm, non-tender, oval or rounded masses about 2 centimeters in diameter, microscopically characterized by a central focus of fibrinoid necrosis surrounded by a palisade of macrophages, which in turn is rimmed by granulation tissue. Pathogenesis. Now we come to the pathogenesis of rheumatoid arthritis. The joint inflammation in rheumatoid arthritis is immunologically mediated. There is a clear genetic predisposition to the disease. The initiating agent and the interplay between genetic and environmental variables are not yet understood. है ना, बहुत कुछ अभी ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में पता नहीं है. ओनली देर आर सम एविडेंस, उनके बेस पे हम कहते हैं कि these diseases are autoimmune disease. The disease is initiated in a genetically predisposed individual by activation of CD4 positive helper T cells responding to some arthritogenic agent, possibly microbial, or to some self antigen. ठीक है, either the cross reacting antibodies are formed, so the initiation is by some microbe or some self antigen. The activated T cell produce cytokines that activate macrophage and other cells in the joint space, releasing enzymes and other factors that perpetuate inflammation, or activate B cells, resulting in the production of antibodies, some of which are directed against self-antigens in the joint. The rheumatoid synovium is rich in both lymphocytes and macrophages derived cytokines. The activity of these cytokines accounts for many features of rheumatoid arthritis. Rheumatoid factor. About 80% of patients have serum IgM, autoantibodies that bind to Fc portion of their own IgG. मतलब antibodies के against antibodies होती हैं. These autoantibodies are called rheumatoid factor. They may form immune complexes with self IgG that deposit in joints and other tissues, leading to inflammation and tissue damage. Genetic factors and infectious agent. इन्फेक्शियस एजेंट जो है एप्स्टीन बार वायरस हो सकता है. अभी तक सब प्रिज्यूम्ड ही है या सस्पेक्ट है. एप्स्टीन बार वायरस हो सकता है, बोरीलिया स्पीशीज हो सकता है, माइकोप्लाज्मा स्पीशीज हो सकता है, पार्वो वायरस हो सकता है, एंड माइकोबैक्टीरिया. Clinical course. Although rheumatoid arthritis is basically a symmetric polyarticular arthritis, there may also be constitutional symptoms such as weakness, malaise, low-grade fever. Many of these systemic manifestations result from the same mediators that cause joint inflammation. As the disease advances, the joints become enlarged, motion is limited, and in time, complete ankylosis may appear. Multi-system involvement must be distinguished from SLE, scleroderma, polymyositis, dermatomyositis, and Lyme's disease and other forms of arthritis. Diagnosis. Helpful in making the correct diagnosis are characteristic radiographic findings: sterile turbid synovial fluid with decreased viscosity, poor mucin clot formation, and inclusion bearing neutrophils. Or RF factor, rheumatoid factor, is positive in 80% of patients. The next multi-system autoimmune disease is Sjogren's syndrome. Sjogren's syndrome is an inflammatory disease that affects primarily the salivary and lacrimal glands, causing dryness of mouth and eyes. The disease is believed to be caused by an autoimmune T cell reaction against unknown self-antigen
expressed in these glands or immune reactions against the antigens of a virus that infects the tissue. ठीक है. तो अभी हमने देखा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एक्चुअली में एंटीबॉडीज आप फॉर्म हुई थी, है ना. अब जोग्रेन सिंड्रोम में जो है टी सेल रिएक्शन हो रहा है अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन. So this is the photograph of the patient of Sjogren syndrome और ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है ऑफ salivary gland. इसमें भी salivary gland cells are destroyed because of chronic inflammatory infiltrate. इसमें dryness of mouth and eye हो जाता है because involvement of salivary gland and lacrimal gland. सिस्टमिक स्क्लेरोसिस और स्क्लेरोडर्मा, ये मैं तुमको जस्ट सेंसिटाइज कर रहे हैं कि व्हाट आर द ऑटो इम्यून डिजीजेस. सो अ वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज डिजीजेस. सिस्टमिक स्क्लेरोसिस और स्क्लेरोडर्मा, ऑल्दो कॉमनली कॉल्ड स्क्लेरोडर्मा, दिस डिसऑर्डर इज बेटर लेबल्ड एज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, क्योंकि हम सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज पढ़ रहे हैं और सारी डिजीजेस में मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है ना. वो स्क्लेरोडर्मा कहने से लगता है कि सिर्फ स्किन इन्वॉल्व है. सो इट्स अ मिसनोमर. इट शुड बी सिस्टमिक स्क्लेरोसिस बिकॉज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव फाइब्रोसिस थ्रू आउट द बॉडी एंड नॉट जस्ट द स्किन. सो इसलिए इसको सिस्टमिक स्क्लेरोसिस कहते हैं. Cutaneous involvement is the usual presenting symptom and eventually appears in approximately 95% of cases. तो कुटेनियस तो सब में ही होता है एंड सीवियर होता है, बट इट इज द विसरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लंग, किडनी, हार्ट एंड स्केलेटल मसल दैट प्रोड्यूसेस द मेजर morbidity and mortality. Systemic sclerosis can be classified into two groups. First is diffuse scleroderma, characterized by initial widespread skin involvement with rapid progression and early visceral involvement. जिसमें सबसे पहले स्किन इन्वॉल्व होती है और उसके बाद फटाफट जो है विसरा इन्वॉल्व होने लगता है ना. तो इसको डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा कहते हैं. एक होता है लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा with relatively mild skin involvement, often confined to finger and face. Involvement of viscera occurs late and hence the disease in these patients generally has a fairly benign course. इसमें जो है स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है, स्किन ऑफ फेस एंड फिंगर्स इज इन्वॉल्व और विसरा बहुत लेट इन द स्टेज जाके इन्वॉल्व होते हैं. इट्स अ सिस्टमिक डिजीज, सो विसरा हैज टू बी इन्वॉल्व पर लेट इन्वॉल्व होता है एंड दिस इज कॉल्ड द CREST syndrome, CREST, CREST syndrome, because of its frequent features. CREST में C stands for calcinosis, R stands for Raynaud's phenomena, E is esophageal dysmortality, S is sclerodactyly and T is for telangiectasia. So rheumatoid arthritis के बाद हमने देखा Sjogren syndrome होता है, systemic sclerosis होता है. अब इसमें जो है इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस में फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन होता है. सो फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेशन with fibrosis is the hallmark of systemic sclerosis. The cause is unknown. It is attributed to abnormal activation of immune system and microvascular injury. CD4 positive cells responding to an yet not identified antigen accumulate in the skin and release cytokines that activate mast cells and macrophage. Now we come to mixed connective tissue disease. Mixed connective tissue disease जो होती हैं, the term mixed connective disease refers to spectrum of pathogenic process in patients who clinically present with several features suggestive of SLE, polymyositis and systemic sclerosis. मतलब उसमें पता नहीं चलता कि ये SLE है, कुछ फीचर्स SLE के होते हैं, कुछ polymyositis के होते हैं, कुछ systemic sclerosis के होते हैं. And they have high titers of antibodies to RNP antigen called U1-RNP. Paucity of renal disease. अब पर इनमें जो है हमने देखा था SLE में किडनी काफ़ी कॉमन था इन्वॉल्वमेंट.
पर पॉसिटी मीन्स कि कम रीनल डिजीज इसमें जनरली नहीं होती, रीनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। U1 RNP होता है एंटीबॉडी एंड एक्सट्रीमली गुड रिस्पॉन्स टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बोथ ऑफ विच सजेस्ट अ फेवरेबल लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस। तो किडनी नहीं इन्वॉल्व होती है एंड दे रिस्पॉन्ड टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो इनका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। इनको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। Mixed connective tissue disease may present as arthritis, swelling of hands, Raynaud's phenomena, esophageal dysmotility, myositis, leukopenia and anemia, fever, lymphadenopathy, hypergammaglobulinemia. Because of these overlapping features, it is not entirely clear whether mixed connective tissue disease constitute a distinct disease or represents a heterogeneous subset of SLE, systemic sclerosis or polymyositis, or most authorities do not consider it as a specific entity. So mixed connective tissue disorder जो है सबका मिला जुला प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम स्पेसिफिकली डायग्नोज नहीं कर सकते कि SLE है या पॉलीमायोसाइटिस है या सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है, तो उसको एक कॉमन नाम दे दिया है मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। पर इनमें जो है दे रिस्पॉन्ड वेल टू द स्टीरॉइड्स और उसमें किडनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। So that finishes our other autoimmune diseases. तो हमने autoimmune diseases में क्या पढ़ा? SLE पढ़ा, Rhumatoid Arthritis पढ़ा, Sjogren's syndrome पढ़ा, Scleroderma या systemic sclerosis पढ़ा और mixed connective tissue disease. These are the example of systemic autoimmune diseases, है ना? और organ specific हम हर organ के संग हर system के साथ पढ़ते जाएंगे, है ना? जैसे थायराइड पढ़े तो आप थायराइड की ग्रेव्स डिजीज पढ़ लो, Hashimoto's थायराइडाइटिस पढ़ लो, है ना? और हेमेटोलॉजी में आपको हीमोलिटिक ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, ग्रैनुलोसाइटोसिस और ITP वगैरह पढ़ा होगा। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो है इम्यूनोपैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने देखा कि इम्यून सिस्टम जो है वो एग्जैजरेटेड हो सकता है या सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज या टी रिएक्टिव सेल्स हो सकते हैं ना, दोनों चीज़ हो सकती हैं। एंटीबॉडीज हो सकते हैं या ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स हो सकते हैं। एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स में हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़े और ऑटो इम्यून डिजीजेस पढ़े। और ऑटो इम्यून डिजीजेस का मैकेनिज्म क्या था? फेलियर ऑफ टॉलरेंस, सेल्फ टॉलरेंस, फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस। अभी तुम सेल्फ टॉलरेंस तुम लोग थोड़ा थोड़ा अपने आप पढ़ लेना, मैंने तुमको ब्रीफली बता दिया था। इट कैन बी अ सेंट्रल टॉलरेंस और इट कैन बी अ पेरिफेरल टॉलरेंस। ठीक है, सेंट्रल टॉलरेंस इज नॉट अ परफेक्ट मैकेनिज्म, सो वी हैव peripheral mechanisms to deal with the slippage of autoreactive T and B cells. अब कोई भी चीज़ या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है ना? तो इम्यूनिटी के हमने एग्जांपल्स पढ़ लिए। इम्यून डिजीजेस produced by exaggerated immune response. Now we come to the immune deficient state, है ना? इम्यून डेफिशिएंसी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्यून डेफिशिएंसी। प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी मैं तुमको थोड़ा सा बताऊंगी, जस्ट द ब्रीफ डिस्कशन। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में आई टीच यू HIV, है ना? तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं ऑटो इम्यून डिजीज तो खत्म कर दी, इम्यून डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब इम्यून डेफिशिएंसी कैन बी प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज और सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज। प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज जो होती हैं इनहेरिटेड डिफेक्ट्स अफेक्टिंग इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट, और सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज आर because of secondary effects of other diseases like infection, malnutrition, aging,
इम्यूनोसप्रेशन, ऑटो इम्यूनिटी और कीमोथेरेपी। तुम लोग इतना इम्पेशेंट मत हो, मैंने ऑलरेडी जो होती है ना उसमें से भी आधी क्या चौथाई कर ली है, पर आई वॉन्ट यू टू नो, है ना, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग। ठीक है, मैंने जितना मैं पढ़ाती थी ना उससे ऑलमोस्ट 1/3 और 1/4 स्लाइड है, सो डोंट गेट इम्पेशेंट। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 10, 12, 15 स्लाइड में ख़त्म कर दूँगी। ठीक है, सो इम्यून डेफिशिएंसी कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। क्लिनिकली अब हम लोग प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीजेस पढ़ेंगे, है ना। आज प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी पढ़ेंगे। मोस्ट प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीजेस आर जेनेटिकली डिटर्मिन्ड एंड अफेक्ट स्पेसिफिक ह्यूमरल और सेलुलर इम्यूनिटी। यही पता है तुमको, दो तरह की हो सकती है, ह्यूमरल विच इज एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेलुलर इम्यूनिटी हो सकती है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी हो सकती है, नेचुरल किलर सेल्स, फेगोसाइट्स और कॉम्प्लीमेंट को अफेक्ट कर सकती है। मोस्ट प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस दे मैनिफेस्ट देमसेल्व्स इन infancy between 6 months to 2 years of life. They are detected because the affected infants are susceptible to recurrent infections. The nature of infecting organism depends to some extent on the nature of underlying defect. सबसे पहले जो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है वो है एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबुलिनीमिया, है ना, XLA और ब्रूटन डिजीज। ए गामा ग्लोबुलिनीमिया मीन्स कि उनमें एंटीबॉडी फॉर्म ही नहीं होती है ना, ए गामा ग्लोबुलिनीमिया, एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबुलिनीमिया। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फेलियर ऑफ प्री बी सेल्स टू डिफरेंशिएट इनटू बी सेल्स। बी सेल्स बनाते हैं एंटीबॉडी, तो बी सेल्स ही नहीं फॉर्म हो रहे हैं, प्री बी सेल्स से बी सेल्स नहीं फॉर्म होते। As a consequence and as the name implies, there is resultant absence of gamma globulin in the blood. ये बात समझ में आ गया। प्री बी सेल्स नहीं बनते हैं, है ना, यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। बी सेल्स नहीं होंगे तो प्लाज्मा सेल्स नहीं बनेंगे, प्लाज्मा सेल्स नहीं होंगे तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और बिल्कुल भी नहीं बनेगी तो हम क्या कहेंगे, ए गामा ग्लोबुलिनीमिया। During normal B cell maturation, immunoglobulin heavy chain genes are rearranged first, followed by light chain rearrangement. In XLA, B cell maturation stops after the initial heavy chain gene rearrangement because of mutation in tyrosine kinase that is involved in pre-B cell signal transduction. This kinase is called Bruton tyrosine kinase. ठीक है, BTK और ब्रूटन टायरोसिन काइनेस। तो प्री बी सेल से बी सेल्स बनने का जो प्रोसेस है विच इज मीडिएटेड बाय ब्रूटन टायरोसिन काइनेस, ये नहीं होता है ना, इसमें म्यूटेशन हो जाता है, तो प्री बी सेल से बी सेल्स नहीं बनते, और बी सेल्स नहीं बनते तो क्या होता है, ए गामा ग्लोबुलिनीमिया आता है। तो अभी हम लोग प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ रहे हैं जो कि जेनेटिकली डिटर्मिन्ड होती हैं। ठीक है, जल्दी एक्सप्रेस होती हैं, कम एज में, फ्यू मंथ्स की एज में ही एक्सप्रेस होती हैं। तो इसमें क्लासिकली द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंट और मार्क्ड डिक्रीज नंबर ऑफ बी सेल्स इन सर्कुलेशन, डिप्रेस सीरम लेवल ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। जो भी 5 क्लासेस होती हैं, पता है ना ये तो, IgM, IgG, IgD, IgA, IgE, है ना, ये 5 क्लासेस, all classes of immunoglobulins are depressed. The number of pre-B cells in bone marrow may be normal or reduced. Underdeveloped or rudimentary germinal centers in peripheral lymphoid tissue, including lymph node, Peyer's patches and appendix and tonsils. इन सब organs में जो है lymphoid aggregates होते हैं, है ना, lymphoid follicles होते हैं। तो lymphoid follicles are formed by the B cells. तो अगर B cells ही नहीं होंगे तो जो है ये rudimentary होंगे, है ना, सारे lymphoid organs में, जैसे Peyer's patches, appendix, tonsil, इनमें जो lymphoid nodules होते हैं, तो ये rudimentary होंगे because there are no B cells, क्योंकि pre B cells से
बी सेल्स बने ही नहीं है। देन एब्सेंस ऑफ प्लाज्मा सेल्स थ्रू आउट द बॉडी, अब बी सेल्स से ही प्लाज्मा सेल्स बनते हैं तो प्लाज्मा सेल्स भी नहीं होंगे। नॉर्मल टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, पर टी सेल में कोई खराबी नहीं है, सो नॉर्मल टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होंगे। Second comes the isolated IgA deficiency. The most common of all primary immune deficiency disease, IgA is a major immunoglobulin in mucosal secretion and is involved in airway and gastrointestinal defense. Most individuals with this conditions are asymptomatic. इनको ज़्यादा कोई symptom नहीं होते, but they have weak mucosal defenses, और weak mucosal defense की वजह से it predisposes patient to recurrent sinopulmonary infection and diarrhea, क्योंकि GIT और रेस्पिरेटरी सिस्टम की म्यूकोजा सिक्रीट करती है IgA, तो साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन और डायरिया होगा। The pathogenesis of IgA deficiency involved a block in the terminal differentiation of IgA secreting B cells to plasma cells. IgM and IgG subclasses of antibodies are normal. Third type है hyper IgM syndrome. In a normal immune response to antigen, IgM antibodies are produced first, followed by sequential elaboration of IgG, IgA and IgE antibodies. The orderly appearance of different antibody type is called heavy chain class switching. The underlying defect is an inability of T cell to induce B cell isotype switching. The most common genetic abnormality is mutation of gene encoding CD40 lesion. This gene is located on X chromosome. 70% of cases hyper IgM syndrome are X-linked. Fourth is thymic hypoplasia or DGeorge syndrome. DGeorge syndrome results from a congenital defect in thymic development with a deficient T cell maturation. Fifth is severe combined immunodeficiency. Severe combined immunodeficiency or SCID represents a constellation of genetically distinct syndromes with the common feature of defect in both humoral and cell-mediated immune responses. Sixth is common variable immunodeficiency. This is a heterogeneous group of disorders characterized by hypogammaglobulinemia. पहले हमने एक कंडीशन देखी थी जिसमें एक गामा ग्लोबुलिनीमिया था, है ना। इसमें हाइपोगामाग्लोबुलिनीमिया होता है विद इम्पेयर्ड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन एंड इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज इम्यून डेफिशिएंसी विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड एक्जिमा, जिसे कि विस्कॉट सेल्विच सिंड्रोम भी कहते हैं। The thymus is initially normal, but there is progressive age-related depletion of T lymphocyte in the peripheral blood and lymph nodes with concurrent loss of cellular immunity. मैं वैसे ही आधा आधा पढ़ा रही हूँ, है ना, बिल्कुल 1/4 कर दिया because you don't want to study. So बस I'm just finishing within 2 minutes. Patients do not effectively synthesize antibodies to polysaccharide antigens and are therefore particularly susceptible to encapsulated pyogenic bacteria. Affected patients are also prone to developing malignant lymphomas. Seventh is immune deficiency with thrombocytopenia and eczema, जिसे कि विस्कॉट-सेल्विच syndrome कहते हैं। विस्कॉट-सेल्विच syndrome is an X-linked recessive disease characterized by thrombocytopenia, eczema, and a marked vulnerability to recurrent infection, ending in early death. The only treatment is bone marrow transplantation. This is a curious syndrome in that the clinical presentation and immunological deficits are difficult to explain on the basis of known underlying genetic defects. Next comes the genetic deficiencies of component and innate immunity. Complement components play important role in inflammatory and immunological responses. Hereditary deficiency of component complements, especially C3, critical for both classical and alternative pathway, result in
increase susceptibility to. तुम क्यों बोले जा रही हो बीच में? सारा काम अभी होगा क्या? I'm saying I'm finishing in 5 minutes. Phagocytes. Several congenital defects in phagocytes are known. These include defects in phagocyte oxidase enzyme, the cause of chronic granulomatous disease, and defects in integrins and selecting ligands causing leukocyte adhesion deficiencies. That's it.